Okay, so today we will start from here. Animals, they need more energy than plants. Why? Hadi, can you Yes, tell why animals ma'am, need? because animals have locomotion. Okay, They moves from one place to another place. Miss animals must look. Miss animals have locomotion, miss, and they go for search and food. And plants don't have locomotion. That is okay, why okay, okay. they have they need more energy to survive. Okay, fine. So one by one, everyone is answering here the right thing only, because animals, they move, so they have to spend extra energy. It's very simple, right? They have to spend extra energy. They have to keep their body warm. They are in different environments, so accordingly they have to keep their body warm, right? So they have to spend extra energy. So this is very simple. Then there is another thing. uh, Movement के अलावा क्या, they have to chew their food, and they have to look after their eggs or young ones. Okay, so chew their food means that is also involving energy. Plants, they make their own food which is present within, and then they utilize it for its growth. So they make their own food by photosynthesis, and they utilize it by respiration. Okay, so here, because animals, they chew their food and they take care of their young ones, many other activities which are involved in social norms, whatever is there, right? So both will include extra energy. Now the next is birds and mammals, they need still more energy. Why so? Yeah, but birds and mammals specifically, why they need more energy? They also need to search. Birds have to fly, right? So birds and mammal, they include birds and Miss, mammals miss, as birds compared and mammals are bol- birds and mammals are warm-blooded, miss. So they need more energy to like to maintain that heat or cold, unlike the cold-blooded animals. yeah, warm-blooded animals means what? What is the difference between warm-blooded and cold-blooded? Just a second. I'll ask by name, okay? Don't speak everyone. Who's there? Nirmal Jyoti, can you tell what is the difference between warm-blooded and cold-blooded? Nirmal, can you hear? Hia, can you hear? Yes, ma'am. Hia, bolo. What is your understanding about cold-blooded and warm-blooded? Anushruta? Don't know, ma'am. I will try. Um, birds and means warm-blooded animals need more energy than No, no, I'm asking cold-blooded what is the animals. difference between warm-blooded and cold-blooded? Warm-blooded animals have high temperature, high body temperature, and cold-blooded animals have low body temperature. Anyone else who wants to answer it? Miss, can I? Yes, Ashmita, bolo. Miss, warm-blooded animals are those animals whose body temperature cannot fluctuate with the surrounding temperature. And the cold-blooded animals are those which body temperature can fluctuate with the surrounding temperature. Okay. So anyone else wants to add anything? This is quite right. But और कुछ कोई बोलना चाहता है? Miss, I know a term for the cold-blooded. हाँ बोलो. Miss, they are known as poikilothermals, but I forgot of the warm-blooded. हाँ बोलो. So poikilotherms are what? Cold-blooded. Cold-blooded. Warm-blooded को क्या बोलते हैं हम लोग? Anyone? Miss, homeothermals. Okay.
So homeothermal and per Ma'am, kilo. can you write the spelling? Your voice is cracking. Okay, wait. I'll give you definition in writing. Just a second. Hmm, just a second. Oh, this will give you an idea about what is homeotherm. ठीक है, homeotherm या thermal animals, thermic animals. Okay, so this is homeothermic. Can you see on the screen? Everyone can see. Yes, miss. So they have constant and relatively high body temperature. Okay, that is homeothermic. And what is this? This is the spelling. You can see. You can write also. And then poikilotherm. Here both the terms are given. Homeothermic, within bracket you can write this warm blooded. Okay, these terms are not introduced to you here in this chapter, but this is some extra point आप लोग लिख सकते हो. Miss, we had this in the kingdom classification chapter. Miss, are they also known as ectoderms and endoderms? Ectoderm and endoderm. No. Those are the layers of our body. Like when embryonic development hota hai, and then in that embryonic development we have 3 dermal layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. Those are different. Cold It's blooded not animals. derm, endotherm. THERM. Oh, therm. Yes. That is the same. Okay. Yes, miss, when you asked for that, I just like remembered this one. But you remember these terms. These are important. Okay. Poikilotherm. These are what? Poikilotherms are those animals whose internal temperature can vary considerably, and it is opposite of homeotherm. That means they cannot maintain their internal body temperature, constant body temperature. And homeothermal animals, they can maintain their internal constant body temperature. जैसे हमारा constant body temperature रहता है, right? What is our body temperature usually? Hadi, you tell. Anyone else here? Yes, 35. 36 degrees Celsius and 97 degree Fahrenheit. Okay, anyone else? It's 37 degrees Celsius and 98.6 degree Fahrenheit. And anyone else? और भी कोई range बताना है तो बोलो. Ma'am, I think 35 degrees Celsius. I don't know. No, it is actually 97.4 degree Fahrenheit. Miss, and actually also it's a particular range. Internal body. 37 point something. Who's speaking? See, body temperature is your 37 degrees centigrade. Exactly, if you see in Fahrenheit, so it is how much? 97 point something. Okay. Body temperature, if you see humans. Okay. So that is that varies. That can vary from one person to another person, but in general 37 degrees centigrade अगर आपको बोला जाएगा 9th standard के हिसाब से in degree Celsius it is 37, and in degree Fahrenheit it is 97 to 98 ऐसे होता है. But Are you exactly speaking?
You are not audible to me. Am I audible to others? Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Now ma'am. you are audible. Okay. So in general 98.6. So आपको general आपको याद होना चाहिए 97 90 98 के approximately रहता है. 98 से थोड़ा कम हो सकता है, 98 से थोड़ा ज्यादा, that is normal. मतलब अगर 99 हो जाता है मतलब फीवर है, ऐसा नहीं है. ठीक है. So 98.6 normal. अगर 100 के ऊपर जाता है, 100 टच करता है, then it is little higher. Okay. 100 101 that is fever. Okay. So हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ये टेम्परेचर है that is very constant. It should not rise or it should not decrease, right? Miss, homeothermal are warm-blooded and kilothermal are cold-blooded. Okay. So again, coming back to this. So birds and mammals, they need more energy because they are homeothermals. Okay. They have to maintain their body temperature. Okay. Like in cold areas, they have to, do specific things. जैसे आपको क्या होता है, ठंडी में कभी देखा है क्या होता है, जब ठंड बढ़ती है तो हम शिवरिंग होती है, दांत हमारा क्लैटरिंग बोलते हैं उसको, दांत कटाने लगता है, ज्यादा ठंड होती है तो ये क्यों होता है? टू प्रोड्यूस हीट, राइट? सो दिस इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट? सो इट इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन विच इज डन बाय मोस्ट ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स हमारी यूजुअली कवर करती हैं बोन्स को, ओके, जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं. सो ऑल दोज मसल्स दे अंडरगो Miss, involuntary. your voice is cracking. My voice is cracking. Yes, ma'am. It's That is some internet cracking. problem maybe. Okay, I'll be sending the recording. Okay, so you can hear in that case. So shivering and clattering of teeth, here you can see, right? Shivering and clattering of teeth, that is what? That is a involuntary action of our muscles, okay, in the emergency situations to produce heat. Okay, when we are in extreme cold, so to produce the body heat, these muscles start moving on their own to produce the heat, right? So these are few actions which shows that homeotherms, they need to spend energy for maintaining their internal body temperature. Clear? Now here also few more lines are written, like we are constantly losing heat to outside air and more of it has to be continuously produced to make up the loss. Liver cells in particular produce much heat and the muscle cells also contribute to it. Okay, so muscle cells obviously they contribute to it. ये involuntary action है. What can be the voluntary action to produce heat? Any example? Ma'am, rubbing of hands. Our hands. Rubbing of hands, running, doing exercises, right? When we run or do exercise, हमको बहुत ज़्यादा we start sweating, right? Why so? Because muscles, they produce lots of heat when we move. Okay, so when muscles move, they produce lots of heat, right? Now we'll see through the equations. Like we have heard only that glucose will give 38 ATP, but along with that, there was some amount of heat. You remember the equation here? यहाँ पे एनर्जी बोला है, ये जो एनर्जी है उसको हम डिवाइड करेंगे, कितना एटीपी में है और कितना हीट में रेडिएट हो रहा है. ओके, सो दैट वी विल सी. So yeah, now glucose has no alternative for respiration. This is the topic. So why glucose has no alternative for respiration? Anyone? Can we get energy from any other molecule? Is it possible? Miss, fats. If the simple carbohydrate, that means glucose, what happens? Cells can break down proteins or fats to produce glucose for respiratory needs. So Miss, ultimately we
need glucose. There are Cannot different hear paths. the Miss. Can you just repeat the last sentence? Who is speaking? Your voice is breaking. Please do not speak in between. Okay. So, glucose, if glucose is not there, like in situations like fasting, जैसे हमारा कुछ व्रत होता है, fasting होता है, right? So we stop intake of glucose, carbohydrates, because carbohydrates, they won't remain in our body as carbohydrates. Okay, means if they are there like as glucose, they will either be going under oxidation to give us energy for whatever activities going inside our body or doing outside with our body. Okay, or what happens, otherwise it gets stored, right? Glucose will get stored as, say, glycogen in the liver. Then fat will be there, that is also stored. Some proteins also doesn't get stored for long, but fats are storage material, right? So जब हमारा बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है तो सबसे पहले क्या यूटिलाइज होता है, फैट. ओके, जैसे ग्लूकोज का जो कन्वर्टेड फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, विच इज स्टोर्ड इन लिवर, दैट गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज. वो भी खत्म होता है तो देन डिफरेंट फैट, जैसे स्किन के नीचे होता है फैट, वो फैट यूटिलाइज होने लगता है. सो दैट ऑल्सो कैन बी एन ऑल्टरनेटिव. ओके, but usually it has to be converted into glucose or go through the same pathway in one way. Okay, now think for a while about the wild animals which are totally flesh eaters. The main constituent of their diet is protein with very little carbohydrates. तो इनके केस में क्या होगा, obviously diet में excess amino acids होंगे. Proteins are made up of what, amino acids. Okay, so they have excess of amino acids. Okay, and amino acids will be absorbed through protein digestion. They will be broken down into the liver, and there is a pathway which you will study in higher classes where these amino acids, they are broken down. Amino acids I have told in the advanced classes जो बच्चे attend किए थे, they have few parts. Okay, उसको break किया जाता है, and one of the portion can be converted to glucose and other portion converts into urea, which is excreted out. Okay, so one portion it can produce glucose and nitrogenous part is converted into urea, which is sent out of the body by as a excreta, right? So the glucose thus produced may be used immediately or it can be stored in the liver as glycogen, I was telling, right? So the glucose which is produced in the body can be utilized or can be stored. Utilize होगा तो as such होगा और store होगा तो glycogen के form में होगा. Okay, this you remember. So a similar process takes place in humans if they take excessive protein rich food. Okay, so अगर हमारी body में protein ज़्यादा होता है तो this is how it will work in the body. Okay, protein won't directly be oxidizing and giving energy. So ultimately it has to be broken down. Again it will come as glucose, some part will go as urea, and then that glucose can be utilized. Okay, so further there are two types of respiration. Acha, before this everything is clear, is there any doubt? Anyone? Miss, Yes. Miss, why the complex substances in our body has to be broken down into simpler forms? Because simpler forms can be utilized. Okay, like as I told you, two types of reaction, you remember? One type of reaction is what, where smaller molecules they join to make larger molecules, right? And in such reactions what happens, energy is utilized, energy is needed, right? जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, right? So if smaller molecules are joined together to form bigger molecules, such reaction needs energy, and they are opposite to these reactions.
where a bigger molecule will break down into small. So in such reactions, energy will be released. Okay, such reactions will give you energy. Correct. So these two type of reactions I told you. First type of reaction was known as endothermic reactions, and second type of reactions are known as Exothermic. exothermic reactions, right? So in our body, why we eat to get energy, right? So most of the things which we eat, they are mostly bigger molecules which are going to be broken down to release energy, right? So respiration is that process where the bigger molecules will be broken down. जैसे आपने देखा, glucose will break down into carbohydrates, water. Okay, sorry, CO2 and water, carbon dioxide and water, right? And it will release energy. And photosynthesis will be just opposite. Photosynthesis is, it's a endothermic, it's a add up reaction. Okay, so उसमें क्या होता है, उसमें CO2 यूज करता है प्लांट बाहर से, वाटर यूज करता है, and it synthesizes carbohydrates, right? And it synthesizes food, and then it utilizes that food. For us, we don't have to synthesize food, we get it from outside, right? So is that clear, Srijita? Yes, miss. Okay, so that's why we have such reactions. We have to get bigger molecules because we need energy. We don't make energy in our body. Okay, we use food to get the energy. Right? Now there are two kinds of respiration. Okay, what are the two kinds of respiration? Aerobic respiration and anaerobic respiration. ये terms आपने सुना होगा पहले भी, ठीक है? Aerobic means very clear from the terminology, it needs oxygen. Okay, it needs oxygen. क्योंकि हमने देखा oxygen required है, 6 moles of oxygen हमने पढ़ा. Now anaerobic respiration क्या होता है? In absence of oxygen. So now you have to think how something can be oxidized in absence of oxygen. Okay, so we'll see that. That is very exceptional because in absence of oxygen, we cannot get oxidation. It undergo some kind of reduction. Okay, so we'll see that. So aerobic respiration means in the presence of oxygen, anaerobic respiration means in the absence of oxygen. Okay, so first let's see anaerobic respiration here. Okay, so it may occur even in our own body in the fast working skeletal muscles. जैसे आप बहुत जब एथलीट, ओके, एथलीट्स के मसल्स में ऐसे रिएक्शंस बहुत होते हैं जहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि बॉडी इतना वर्कआउट करती है कि उनको बहुत ज्यादा जल्दी एनर्जी चाहिए, बहुत एटीपी चाहिए, राइट? और जितना ऑक्सीजन उस सेल में पहुंच पाता है थ्रू ब्लड, यू नो, माय दैट ऑक्सीजन बिकम्स इनसफिशिएंट. Okay, so a condition occurs temporarily, okay, where there is no oxygen and respiration has to occur because they need energy. So in such condition, those muscles, what will happen there? Anaerobic respiration will occur. And what is the product of such anaerobic respiration? Here we'll see. So during continuous physical exercise as fast running, walking over long distance, swimming, wrestling, weightlifting, जो भी बहुत energy requiring हमारे physical exercises होते हैं. So there what happens? Our muscles work too fast. Okay, and then they get, you know, insufficient oxygen. मतलब oxygen खत्म हो जाता है. Temporarily वहाँ पे जितना oxygen needed है, उसकी supply उससे कम हो जाती है, right? So एक anaerobic environment बनता है, and then anaerobic respiration occurs there. And what produces? Lactic acid is produced. Okay, here you can see. In anaerobic respiration, many products are there in anaerobic respiration. One of the product in our muscles are lactic acid. So bad, I mean, I'm drawing. Just a second. I have to. Okay. So this is lactic acid, the product of anaerobic respiration in our muscles. ठीक है, याद रखो हमारे बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड. ओके, सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट टाइप्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जहाँ पे इथेनॉल भी बनता है, जहाँ पे यू नो ब्यूटायरिक एसिड,
and different kind of acetic acid, alcohol. Alcohol matlab bhai, alcohol means ethanol is a kind of alcohol. Okay, so all those things are there. Lactic acid is one of the acids which are produced. Okay, so muscles mein lactic acid is formed, and accumulation of lactic acid will gives the feeling of fatigue. इसलिए आप थक क्यों जाते हैं? That is the reason. आपके पास sufficient oxygen supply नहीं रहती है. Okay, and आपकी body में anaerobic respiration होता है, which causes the muscle to get fatigue, क्योंकि उनको sufficient energy नहीं मिल पाती है उतना work करने के लिए. So as you exercise more and more, आपकी body में blood flow बहुत strong होता है. बोला जाता है ना कि बहुत ज्यादा lazy होने से आपको बहुत weakness होने लगती है. और आप जितने एक्सरसाइज, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है. ब्लड फ्लो जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना फास्ट होगा, उतना आपकी बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन विल बी सफिशिएंट. Okay, so that's why as you when you are not running at all, if you run for 100 meters also, you will start, you'll feel fatigue, right? आप थक जाओगे बहुत जल्दी, हाफने लगो. But if you practice it daily, then you can increase it. So those things are there in body, and it can go to extremes also. Okay, so here in such condition, yes, anyone doubt? Muscle cramps also occur due to lactic acid. What can occur? Muscle cramps. या मसल क्रैम्प आप जब एक्सेसिव कर लेते हो, जैसे आपके मसल को अभी और जरूरत है ऑक्सीजन की, वो काम नहीं कर पा रहा है, एंड यू आर स्ट्रेचिंग इट, देन व्हाट हैपेंस. जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे वो स्ट्रेच होते हैं और फिर रिलीज होते हैं. मतलब ना, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट इन स्केलेटल मसल्स. ओके, सो मसल क्रैम्प्स में वही होता है, व्हेन यू गिव एक्स्ट्रा लोड टू योर मसल, Miss, इट कैन बियर. Miss, muscle cramps also occur due to lack of water. Yeah, it can be due to different reasons. किसी ना किसी चीज की कमी से हो सकता है, and especially the main thing is when you give them extra load, and वो बहुत लेवल, हाई लेवल तक भी जा सकता है. cramp is one thing. वो बहुत बार आपका मसल्स के साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं. I am not remembering the name of such diseases, but those are also there. I'll tell you those things when when you will be going to read that in higher classes. Okay, so here this particular condition is called what? Oxygen depth, मतलब oxygen की कमी. ठीक है? So when you rest after such exercise, the lactic acid will slowly get oxidized. क्योंकि फिर ऑक्सीजन आएगा. जैसे ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में इथेनॉल एंड एसिड्स बनेंगे. ठीक है, इथेनॉल एंड एसिड्स विल फॉर्म बाय रिडक्शन प्रोसेस, एंड जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो दे विल अगेन ब्रेक डाउन एंड गिव CO2 एंड वाटर. यूजुअली दे ब्रेक डाउन. Okay, so as the oxygen gets accumulated back in the cell, matlab starts coming, then that lactic acid again can oxidize back. Okay, so that is called as depth is cleared. Okay, means that condition you can tell like that. Now this is one of the situation in our muscles. So let's see what is happening in such situations equation wise. Okay, so this is your first equation. क्या इक्वेशन है? 1 mole of glucose with 6 mole of oxygen is giving 6 mole of carbon dioxide, 6 mole of water, and how much energy? 686 kilocalories. 686 kilocalories will be produced per mole of glucose. Okay, 1 mole of glucose is giving you energy how much? 686 kilocalories. That means 686,000 calories. Okay. Now, thus the above equation depicts the chemical substance in mole. Thus, by taking 180 grams of glucose, the energy released is 686 kilocalories. ठीक है, ये आपका फिर अगेन आपका केमिस्ट्री है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना ग्राम्स होगा, जितना आप कैलकुलेट करो उनका मोलर मास जो है. ठीक है, सो मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है? आपको पढ़ाया गया है मोलर मास कैलकुलेट करना? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया गया होगा. ग्लूकोज
Are you sure? No, it is 180. Okay, you can see now 6 carbon, 12 hydrogen. 12 hydrogen is 12 oxygen. You can calculate oxygen का कितना होता है मोलर मास? Yes, miss. 12. Miss, 6 carbon is कार्बन का 72. 12 होता है, कार्बन का 12 Miss, होता है, तो 6 into 12 कर लो। oxygen का ऑक्सीजन का 16. कितना होता है? 16 होता है, 16 into 6 कर लो, जितना हुआ उसको प्लस कर दो। ठीक है, so it 72. comes to 180. 6. Yes, miss. 180. Yes, miss. It comes 180. That means 1 mole of glucose 180. will have 180 grams of glucose. ठीक है, अगर ग्राम्स में कैलकुलेट करो, क्योंकि हम बोलेंगे कि 1 मोल जरा लाके प्लेट में डालना, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, 1 मोल मतलब कितना होगा, तो उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, और फिर वो जितना आता है उतना ग्राम डालने से वो 1 मोल हो जाएगा, राइट? सो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज व्हेन यू पुट इन, then that is 1 mole. That means 180 gram of glucose will give you 686 kilocalories. Okay, understood? So in fact जब हम शुगर टेस्ट और ये सब कुछ करते हैं ना, तब आपको स्पेसिफिकली बाय द टेस्ट मेजर ऐसा बोला जाता है कि आपको 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेना चाहिए, मतलब फास्टिंग के बाद 100 ग्राम ग्लूकोज लेके उसके 2 घंटे के बाद फिर से टेस्टिंग होनी चाहिए, बट वो आपको बोलते हैं नॉर्मली यू डू, खाना मतलब जो भी नाश्ता करो एंड देन डू, बट आइडियली देयर आर रूटीन समथिंग measures are there. Okay, so 180 gram of glucose is giving 686 kilocalories. ठीक है, और इसको हम अगर किलो जूल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सो कितना हो जाएगा? 1 किलो कैलोरी इज 4.2 किलो जूल। ठीक है, कैलोरी और जूल का ये इक्वेशन होता है। सो 686 into 4.2, that will be how much? 2890। ठीक है, सो 2890 किलो जूल्स। जिस भी तरह से आप रिप्रेजेंट करो, आपको ये आइडिया दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किसी भी तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ हीट कितना रिलीज होता है और इन टर्म्स ऑफ एटीपी कितना निकलता है। ठीक है, सो हमने बताया 38 एटीपी रिलीज होता है 1 मोल ग्लूकोज से। ठीक है, और हीट कितना होता है? 420 किलो कैलोरीज। 420 किलो कैलोरी हीट निकलता है एंड 30 एटीपी आपका एज एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एटीपी रिक्वायर्स हाउ मच किलो कैलोरी? 7 किलो कैलोरी। तो 38 एटीपी बनने के लिए हमको कितना किलो कैलोरी चाहिए होता है? 266। ठीक है, सो इसलिए अगर हम 686 में 266 माइनस करते हैं तो 420 रिमेन्स विच इज रिलीज एज हीट। ओके, इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? Any Yes, doubt? ma'am. Okay, so this is all about the equation. How much energy is released as heat, how much is there in form of ATP. जो भी एनर्जी हीट की तरह रिलीज होती है वो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज नहीं होगी। ठीक है, जो भी एनर्जी हीट की तरह यूज रिलीज हो रही है वो सिर्फ हमारे बॉडी टेम्परेचर या हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें लग जाती है, मतलब it will be just as a heat. Okay, and whatever is there in the form of ATP, that will be utilized in other processes as energy coin, energy currency. ठीक है, now next is your anaerobic respiration in animals. ठीक है, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें होती है? एक तो बताया लैक्टिक एसिड का आपको, जो एनिमल्स में भी होता है, जो हमारे मसल्स में भी होता है। ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज will produce one of the products, say lactic acid. It will produce 2 ATP and some amount of heat. Okay, so obviously this thing is very less. ठीक है, anaerobic respiration में बहुत कम एनर्जी मिल रही है आपको, सिर्फ 2 ATP हो रहा है और थोड़ा सा हीट मिल रहा है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है एटीपी के टर्म में। एनारोबिक में 38 सॉरी एरोबिक में 38 एटीपी रिलीज होता है, एनारोबिक में 2 ATPs. Okay, this is important when it is asked to differentiate between anaerobic and aerobic respiration. Okay, so what are other points in anaerobic respiration? Second thing, it is a very slow process. Okay, it is a very slow process. Second,
the reaction cannot continue for a long time. Okay, ये जो हम लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखो कि अभी आपको किस टर्म में पढ़ाया जा रहा है, मसल के टर्म्स में पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनारोबिक ही होते हैं. They stay, they grow anaerobically only. Okay, so they have all those enzymes, all those things. Okay, where anaerobic environment is maintained and they grow like that only. Okay, so there that is not a temporary reaction. Okay, but when we are talking about lactic acid, this what is happening, this is happening in our muscles in the case of insufficient oxygen. So there it will be temporary. So इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि the reaction cannot continue for long time. Okay, and the produced lactic acid can have toxic effect on cells, which causes muscle to fatigue and muscle ache. Okay, those things. Then here in this process carbon dioxide release नहीं होता है. No CO2 release. आपने equation देखा, right? There is no CO2 release. Okay, total energy released per mole of glucose is very less compared to anaerobic respiration. ठीक है, आपको ये स्पेसिफिक एनर्जी क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि इसमें कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होगा उसके बेसिस पे इसकी एनर्जी डिफर करती है. प्रोसेस में अगर इथेनॉल है या एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स आ जाते हैं. उसके बाद यूजुअली कभी भी रिएक्शंस ऐसे नहीं होती. जैसे आप लोग प्रैक्टिकली जब काम करोगे, जैसे वी यूज्ड टू वर्क विद फर्मेंटेशन बैक्टीरिया एंड ऑल, तो वहां बैक्टीरिया को जब हम जैसे ग्रो कराते हैं एनारोबिक एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है, सिर्फ एक ही ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा या सिर्फ एसिटिक एसिड मिलेगा. उसमें थोड़ा बहुत इथेनॉल भी होता है, थोड़ा एसिटिक एसिड भी होता है. मतलब इट कैन प्रोड्यूस सेवरल थिंग्स. कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको उस नाम से जानते हैं. ठीक है, सो दिस पाथवे कैन मेक इथेनॉल एंड एसिड्स. यूजुअली पहले इथेनॉल बनता है, फिर वो और रिड्यूस होता है तो एसिड बनता है. दैट इज यूजुअल पाथ. ओके, so here in our muscles mostly lactic acid is formed, which causes the toxic effect. Okay, and so these 4 points are important when you are making a table, you know, for differentiating anaerobic and aerobic respiration. Okay, here you can see यहाँ पे tissue respiration के बारे में बताया गया है. So we'll come to that respiration में. ठीक है, anaerobic respiration in plants and anaerobic respiration in animals. What is the difference? So here in plants they can produce ethanol, ठीक है, and they can produce glucose. But animals में ऐसा नहीं होता है. Animals में there is no CO2 and they produce usually lactic acid more. Then here energy जो release होती है, heat energy comparatively higher होती है. Here it is very very less in animals. And CO2 release here can cause foaming, you know, bubbling, foaming effect. Okay, and here there is no such effects are seen. Okay, so these are few information about anaerobic process. Anaerobic respiration clear हुआ सबको? Any doubt here? Anyone? Okay. Yes. No. You have seen the reaction, right? यहाँ पे reaction लिखी हुई है. See. ठीक है, आगे चल के आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हम पढ़ाएंगे. एनारोबिक के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द रेस्पिरेशन. लाइक हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, दैट इज अ मिसकंसेप्शन. दैट इज फर्स्ट पार्ट. ब्रीदिंग इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, इन ह्यूमंस हम जब बात करेंगे, so breathing is the first step. Okay, so breathing means taking in air and breathing out the air. So दोनों ही केस में ऐसा नहीं हो क्या होता है कि आप जब ब्रीद इन कर रहे हो तो आप सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हो और ब्रीद आउट कर रहे हो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहे हो. नहीं, हाउ कैन यू ब्रीद इन ओनली ऑक्सीजन?
इज देयर एनी फिल्टर कि एटमॉस्फेयर से आप नाइट्रोजन को पूरा हटा दोगे और CO2 को हटा दोगे, बाकी सबको हटा दोगे, एंड देन ओनली ऑक्सीजन विल गो? No, right? So we breathe in air, and whatever percent of oxygen is there is present in air, that will go inside. And when we breathe out CO2, then also actually if you see, मतलब क्लास 11th में आपको ये डिटेल बताएंगे कितना परसेंट CO2 होता है, कितना क्या होता है, तो उसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब भी ज्यादा होती है CO2 से, ओके, बट CO2 पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ओके, व्हेन इट कम्स इट इज वेरी लेस, राइट? कितना होता है CO2 एयर में? 0.01%. वेरी गुड, 0.03. ओके, सो हम ये बात करेंगे कि हाउ मच इट इंक्रीजेस व्हेन वी ब्रीथ आउट, ओके, इन लेटर क्लासेस. देखते हैं आपकी कोर्स में अगर है मेंशन, सो विल गो, बट आई थिंक इट्स नॉट मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड ऑल, but in general we'll see most of the things, okay, it is in details only. So breathing is the first point. Then what is next? Next is your gaseous transport. अभी ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन एयर से कहाँ पहुंच गई? आपके लंग्स में, ठीक है, एयर से आपने नोज से ब्रीथ किया, फिर नोज से होते हुए पूरा आपके ट्रैकिया, दैट मींस विंड पाइप से होते हुए इट गोज इनटू द लंग्स, ठीक है. ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस है. ब्रीदिंग आप पढ़ोगे तो हम आगे पढ़ाएंगे कि ब्रीदिंग होती कैसे है, कैसे कैसे बाहर से एयर अंदर चली जाती है, व्हाई इट गोज इनसाइड, ठीक है. सो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर, लाइक फिजिकल फेनोमेना, कि हाउ इनसाइड का प्रेशर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, देन ओनली बाहर से एयर अंदर जाती है, ठीक है. सो हियर इन गैसियस ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द लंग्स. ये एक और चीज होती है गैसियस ट्रांसपोर्ट में, आप ये भी देखोगे कि कैसे लंग्स से वो ब्लड में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लंग्स में तो ब्लड नहीं है, राइट? ब्लड इज इन ब्लड कैपिलरीज which are very close to the lung alveoli, लंग का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, outer most, okay, there, which has very fine membrane, okay, so there it occurs through diffusion, okay. So the oxygen which is absorbed by the blood in the lungs, that is carried by the RBCs as what? Oxyhemoglobin, ठीक है. हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कहाँ है? ब्लड में, ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, एंड दैट हीमोग्लोबिन इज कैरिंग ऑक्सीजन, देन इट बिकम्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी बाय मीन्स ऑफ आर्टरीज. Arteries will carry oxygen rich blood, right? So the carbon dioxide from the tissues is transported to the lungs by blood by means of there are two ways, ठीक है. First is bicarbonates, this is the maximum portion, ठीक है, जैसे 70% के आसपास ये बाइकार्बोनेट्स की तरह ट्रैवल करता है CO2, ठीक है, इन द प्लाज्मा, राइट? मैंने पढ़ाया था आपको ब्लड में, ब्लड क्या होता है? कार्पेसल्स होता है, प्लाज्मा होता है, राइट? सो प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट्स की तरफ ट्रैवल करता है, और हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है, ओके. इट इज नोन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन when it binds with hemoglobin, okay. So these are two ways. There is actually in higher classes we'll study there are three ways, but these are two main ways, okay, bicarbonates and carbamino hemoglobin. Third is what? Third is tissue respiration. Tissue respiration क्या होती है? The terminal blood vessel, that means the capillaries, they deliver oxygen to the body cells or tissues where oxygen diffuses through their thin walls, and in a similar way the capillaries pick up the oxygen, the carbon dioxide released by them. मतलब ब्लड ने क्या किया? ब्लड ने इन फॉर्मेट में, जैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में क्या किया? ऑक्सीजन को हर एक पार्ट तक पहुंचा दिया, ठीक है, क्योंकि इसीलिए ब्लड कैपिलरीज थ्रू आउट होते हैं हमारे हर पार्ट में,
ओके, वहां तक उन्होंने ऑक्सीजन को पहुंचाया. नाउ व्हाट विल हैपन, देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड विल गो टू द टिश्यूज, राइट. सो बहुत सारे बैरियर्स हमने देखे. एक बैरियर होता है जब लंग्स से ब्लड में जाना है, फिर ब्लड घूम फिर के जब टिश्यूज के पास, रिस्पेक्टिव टिश्यूज के पास पहुंच रहा है, वहां अगेन ब्लड से उसको स्किन का वो जो भी ऑर्गन है, ठीक है, जो भी बॉडी का ऑर्गन है उसके टिश्यूज में जाना है. सो अगेन फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू द टिश्यू, ऑक्सीजन विल बी diffused out and CO2 will be diffused inside, because carbon dioxide का concentration will be higher in the cells there. क्यों हो रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है. ठीक है, हर एक सेल के माइटोकॉन्ड जो उसका साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा है. रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हो रही है, वो CO2 ऑब्वियसली सेल में एक्यूमुलेट हो रही है, तो वो सेल के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट होती है अगेन बैक टू द कैपिलरी की मेम्ब्रेन में, क्योंकि वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है. और हमारे ब्लड कैपिलरी में क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो सेल के टिश्यू में, मतलब सेल्स में डिफ्यूज आउट होती है. ठीक है, सो दिस इज टिश्यू रेस्पिरेशन. ओके, सो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचना, टिश्यू में आना. ठीक है, it diffuses out through thin walls and in similar way capillaries pick up the CO2 released. Okay, then the last is cellular respiration. Cellular respiration को आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा in higher classes. ये क्या होता है, the complex chemical changes which occur inside the cell to release energy from the glucose. ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट जहां पे हमने बोला है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर रिलीजिंग एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन. सो ये प्रोसेस जो है, एग्जैक्ट प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, उस तक पहुंचने में 3 स्टेप्स आते हैं हमारे. ब्रीदिंग होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, एंड देन टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, टिश्यूज में उसका आना. ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी डाउट हियर? एनीवन? मैम कर्ब साइकिल, ये वर्ड कहाँ लिखा है? क्रैब साइकिल तो मैंने कहीं पढ़ाया नहीं आपको. अभी आएंगे, वहां पे आएंगे, वेट. आप लोग बहुत फास्ट जा रहे हो, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ. ओके, हियर, सो दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे ब्लड देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में ऑक्सीजन जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड कैपिलरी में आ जाती है. इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन. जब टिश्यू रेस्पिरेशन आप लिखते हैं, अगर आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप 2 लाइन लिखने के बाद अगर ये डायग्राम बनाओगे तो इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि आपको हाफ नंबर या कुछ नंबर कोई नहीं काट सकता है. देयर इज नो ऑप्शन. ओके, सो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली, बिकॉज क्या होता है, वर्ड्स में आप कभी कभी गलत हो जाते हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट व्हेन यू आर मेकिंग डायग्राम तो टीचर को समझ में आता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओके, so diagram is always beneficial. Yeah, so now, yeah, this is something extra. Where does respiration occur in a cell? ठीक है, so respiration मतलब ये respiration हम बात कर रहे हैं cellular respiration की. सेल में पहुंच गया है अभी ऑक्सीजन. ना वहां जो respiration हो रही है, वो respiration कहाँ हो रही है? तो 2 स्टेप्स हैं, 2 मेजर स्टेप्स हैं. पहला है ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड इज Krebs cycle. Okay, so the first part, the glycolysis, this occurs in the cytoplasm. Cell का जो cytoplasm है, there this is occurring, and Krebs cycle occurs where? Inside the mitochondria. ठीक है, ये 2 places बहुत clear होने चाहिए. ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है. ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या होता है इसका एंड प्रोडक्ट, आपको पढ़ाया नहीं है यहाँ पे, पर आगे पढ़ेंगे हम. उसको बोलते हैं हम लोग पायरुवेट. ठीक है, पायरुविक एसिड. ठीक है, वो you have told us. फिर वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, जो एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, एंड दैट एसिटाइल कोए एंटर्स इनटू द Krebs साइकिल. ठीक है, तो वहां पे आप डिटेल्स में पढ़ोगे कैसे वो साइटोप्लाज्म से ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है. बहुत सारी चीज होंगी, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, राइट. उसमें उसको एंट्री करने का परमिशन होगा,
जब आप बहुत हायर क्लास में जाओगे तो आपको ये सब डिटेल्स समझ में आएंगी कि कैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो रहा है, राइट, जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं वो एंटर हो रहे हैं। तो क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम्स यूज होंगे वो एंजाइम्स कहाँ होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स होंगे। ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएंगी अगर आपको उनका लोकेशन पता है। सो ग्लाइकोलिसिस इज अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, break down into pyruvic acid which further breaks down into ethanol in plants and lactic acid in animals। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है, जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल की तरह मूव करेगा कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड्स बनाएगा, मींस दैट विल गो इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ, ग्लाइकोलिसिस के समय में एक्चुअली आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। Are you understanding? So glycolysis is a process which will occur both in anaerobic and aerobic animals या organisms। ठीक है, तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। पायरुविक एसिड के बाद वो बाइफरकेट करता है। अगर वो क्रेब्स साइकिल की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। वहां पे यहाँ तक एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती है, एटीपी की फॉर्म में रिलीज नहीं होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको हायर क्लासेस में ये डिटेल्स। तो ये पूरा एक चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी साइकिल्स डिटेल में पढ़ती हैं। ग्लाइकोलिसिस में काफी स्टेप्स हैं, हर स्टेप में कौन एंजाइम होगा, कितना क्या रिलीज हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स यू विल स्टडी इन डिटेल्स इन क्लास 11th। देन क्रेब्स साइकिल जो है, अच्छा ये एनारोबिक होता है और यहाँ पे एनर्जी बहुत ही कम यूटिलाइज होती है, रिलीज होती है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो होता है ये इट नीड्स ऑक्सीजन, मैंने बताया बिना ऑक्सीजन के इट कैन नॉट एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। इट इज अकरिंग वेयर, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टू प्रोड्यूस एटीपी एंड CO2। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं बताया, जब हम 10th में जाएंगे तो 10th में आप पढ़ोगे कि कैसे ये यहाँ पे एनर्जी कॉइन एटीपी नहीं रिलीज करता है कोई भी, ना तो ग्लाइकोलिसिस रिलीज करता है, ग्लाइकोलिसिस भी रिलीज करता है थोड़ा बहुत, बट मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो कुछ और फॉर्म्स में होती है, जिसको हम NADH FAD ये सब मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो सारे मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चेन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें वो ATP रिलीज करते हैं। ठीक है, वो भी एनर्जी कॉइन्स ही होते हैं, पर जैसे कि जैसे NAD को बोलते हैं, एक NAD से 3 ATP मिलेगा, एक FAD से 2 ATP मिलेगा, कुछ ऐसा रिलेशन होता है, बट वो ATP रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। ठीक है, तो वो एक और साइकिल होती है। तो यहाँ पे आप क्रेब्स साइकिल में समझो बस कि इट नीड्स ऑक्सीजन, इट इज ऑकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ब्रेक डाउन होता जाता है मॉलिक्यूल का, एंड maximum energy is released in Krebs cycle. Okay, so H plus ion released in the cycle are removed through the oxygen supplied by forming H2O. ठीक है, अभी ये पॉइंट जो है आप ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको डिटेल्स में हम जाना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन तो रिलीज होगा ही हर एक स्टेप में, बहुत सारे स्टेप्स में वो प्रोटॉन्स रिलीज होने के बाद एक जगह पे एक्यूमुलेटेड होते हैं, फिर वो प्रोटॉन को हम एक बहुत हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव आउट करते हैं, और उस फ्लक्स से क्या होता है, ATP जनरेट होता है। ठीक है, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल्स में। ठीक है, सो H plus ion released in the cycle are removed through the oxygen supplied by forming water। तो ऑक्सीजन और H plus मिलकर के वाटर रिलीज करते हैं, तो ये वाटर बनता है आपका, जो मैंने बताया कि वाटर रिलीज हो रहा है इक्वेशन में, वो वाटर रिलीज इस तरह से होता है। ठीक है, एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, so now you know what for our body needs oxygen, yes, to remove the H plus ions। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एक्चुअली इट इज। जब आप हाई क्लास में पढ़ोगे तो ये आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लाइक MCQ। ठीक है, कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कहाँ है, ब्रेकडाउन जब हो रहा है पूरा डिटेल्स में, तो जो H plus एक्यूमुलेट होता है
बहुत सारे रिएक्शंस की वजह से, उस H+ एक्यूमुलेशन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, उसको रिलीज जब किया जाता है तो एटीपी भी फॉर्म होता है, एनर्जी बनती है, और साथ में ऑक्सीजन से मिलकर के इट विल फॉर्म वाटर. सो ऑक्सीजन नहीं होने से ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा. ठीक है. Ma'am, H+ ions are harmful. Not harmful, but actually whenever some potential is building na, so it has to move out, and when H+ has to move out, it has to combine with something to get completely released. Okay, so otherwise क्या होगा, आपका उस जगह का पोटेंशियल बहुत हाई रहेगा, उस जगह की का pH will be very different, many things will occur. ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे स्टेप को, इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम फाइनली वो जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन है, उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, एंड दैट वाटर इज एज अ सेल्यूलर प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है वो. ठीक है, बाई प्रोडक्ट या जो भी बोलो, मेन प्रोडक्ट जो भी है, वाटर एंड CO2 बोथ आर द प्रोडक्ट्स. बट हमारे लिए जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज है वो है हमारी एनर्जी और हीट, for what we are actually doing this respiration process. Okay, why it has been designed by the Lord? To give us energy. That's why we are eating everything, but these are the other products which are required in the process. Now okay, a common misconception. Someone can read this. Who wants to read? Adrita, can you read? Hello, Adrita. Yes, ma'am. Yeah, please read this. A common misconception. Many people wrongly say we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Instead, we should say we inhale containing much oxygen and very little carbon dioxide, and exhale air containing less of oxygen and more of carbon dioxide than before. Okay, understood. This point I already told you before. So here now breathing is given in details. अच्छा, till here is everything clear? कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, किसी को भी? No question? So it's already 6:12. So we can take a little of this breathing process. सब लोग Ma'am. saturated तो नहीं हो गए? Yes. Ma'am, can you repeat what you said before this? Because I got disconnected. Oh, it was about this misconception जो मैंने already आपको बताया कि हम जब inhale करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम oxygen inhale करते हैं और exhale करते हैं, तो we don't exhale only carbon dioxide, right? We inhale the air, right? And we inhale the air with more oxygen and very less CO2, right? And when we exhale, then oxygen concentration becomes lesser and CO2 becomes higher than what? Then the inhale constituency. मतलब आपका जो inhale air में जितना परसेंट ऑक्सीजन और जितना परसेंट CO2 होता है, exhale air में आपका ऑक्सीजन उससे कम हो जाता है और CO2 उससे ज्यादा हो जाती है. Okay, understood? Is it clear to everyone? Yes, miss. Okay. So now there are different respiratory organs which are involved in the breathing process. Okay. क्या क्या breathing process में organs involved होते हैं? Starting from nose, then pharynx, larynx, trachea, bronchi, and then finally lungs. ठीक है.
So the first is nose. Nose में क्या क्या होता है? External जो nose की opening होती है उसको हम बोलते हैं nostrils. ठीक है? That is external part of nose, and which is separated by a cartilaginous septum, right? So जो nose आप देखते हो, that part is what? This is cartilage. Okay, this is cartilage. This is not bone. We know that. Okay, and there are hairs present in the nostrils, right? For what? Stop the dust, right? To stop the dust particle, we have hairs, we have mucus. Okay, these are to stop the dust particle to from entering the lungs. Okay, then the two nostrils open into the nasal chamber. Nasal chamber is the inside portion, right? Here you can see this is your nostril, okay, and this is your nasal chamber, okay, which goes inside. So the nasal chamber में क्या होती है? Inner lining of the nasal chamber performs three functions. पहली चीज क्या होती है? आपके जो एयर है उसको गर्म करती है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऑटोमेटिकली वो बॉडी टेम्परेचर के थ्रू जाता है तो इट बिकम्स वार्म, देन इट एड्स लिटिल मॉइस्चर, ठीक है? इट्स म्यूकस सिक्रीशन एंट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल्स. ये पूरा का पूरा पार्ट में म्यूकस होता है, ठीक है? मतलब इज देयर, जो कि आपके एयर में जो भी ऐसा पार्टिकल है which should not enter, मतलब only gas should enter ना, particulate matter if there is any, it should stick to the mucus, ठीक है? इसलिए जब आपको कफ या ऐसा कुछ होता भी नहीं, डेली देयर शुड बी अ प्रैक्टिस टू रिलीज इट ना. आपको आपका नोज क्लियर करना चाहिए, म्यूकस क्लियर करना चाहिए. तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में होनी चाहिए डेली. पहले के लोग बहुत टाइम दे करके वो चीज किया करते थे. अभी लोग फास्ट लाइफ में दे डोंट डू, बट दैट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, इफ यू क्लियर इट, दैट मीन्स जो भी म्यूकस है फॉर अ टाइम भी, उसमें जो भी फंसा है या जो भी अब्सॉर्ब किया गया है, दैट शुड बी रिलीज्ड आउट. ओके, so it's that entraps harmful particles. So always breathe through the nose and not through mouth. इसीलिए बोला जाता है क्योंकि माउथ से आप लोगे तो क्या होगा? There won't be any such filters. Okay, an additional function of nose is what? To smell. Okay, sensory cells of the smell are located in special pockets situated high up in the nasal chamber. When you smell something special, you give a little sniff which carries the odor up into this pocket. हाँ, मतलब ये एक है कि आपका नोज का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहाँ पे वो सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी पार्ट होता है, जो आपको स्मेल से पता चल जाता है कि कौन सी चीज है ना. तो वो थोड़ा बहुत सेंसरी में हम पढ़ेंगे, जब हम सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना, वहां पे हम पढ़ेंगे लाइक नोज, ईयर्स, सब कुछ हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि वहां से कहाँ कैसे सेंस करता है, सेंस कैसे ब्रेन को रीच करता है, फिर वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है. So those things. Okay, so does the nose help in speaking? Anyone? Does it help in speaking? Ma'am, can you Yes, repeat miss. the question? Yes, why? Miss, in the pronunciation of some N sounds. Yeah, there'll be a change of tone. कुछ आपको चेंज लगेगा अगर आप नोज बंद करके बात करोगे, ठीक है? यू हैव टू फोर्सफुली डू सम थोड़ी देर तक, लेकिन बट आप जब थोड़ा नॉर्मल होने का कोशिश करोगे तो अगेन यू विल फील कि देयर इज सम चेंज इन द टोन. ओके, Miss, why there is a change in this tone, tone when we speak the sentence? What miss? What defect is there if we close our nose and try to speak? try to speak what is written here. You speak Nana ji. No, miss. I am telling that. Miss, How does the nose help? Oh, how it is helping it. Okay. Miss, हाँ बोलो स्वप्नवीर. there is a technical process by which we means how nose helps us. Miss, we need air. We need a flow of air to vibrate our vocal cords. So while speaking, we actually exhale the air through the mouth. So
most of the air is exhaled by the mouth and air is taken in through the nasal cavity. So when we close the nasal cavity, uh, the passage of air is through the mouth and exhalation of air is also through the mouth. So there is difference between the pitches of the sound which comes when nose is closed or nose is opened. Very good. Okay, everyone understood what he said? समझ में आया किसी को? नहीं समझ में आया? So basically जब आप क्या करते हो, जब आप हम बोलते कैसे हैं, how we speak, ठीक है, हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है इट्स अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन एक्चुअली, ठीक है, बहुत फाइन मेम्ब्रेन होता है, जो जब आप उससे एयर को पास करते हो तो जिस तरह से पास करते हो उससे वैसी साउंड आती है, तो वो एयर शुड कम आउट फ्रॉम समवेयर, राइट? तो क्या होता है कि वो मोस्टली आपके माउथ से इट कम्स आउट, राइट? बट देयर आर फ्यू नोटेशंस, ओके, स्पेशली एन जब प्रोनाउंस करते हैं हम, तो देयर इज अ पार्ट वेयर एक्चुअली नोज का जो चैम्बर है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द एयर touches, it goes from there and comes ऐसे, okay, that's why in में you feel some pressure here, you know, if you pronounce na या n बोलोगे तो you will feel a pressure there also. That's why different notes are there जहाँ पे आपको नोज का जरूरत पड़ता है, but not in all, few particular things will be like they are helped with that nasal chamber का जो वहां का जो पोर्शन होता है एयर का, उससे उसको हेल्प मिलती है. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? एनीवन? No, miss. ओके, नेक्स्ट इज योर फेरिंग्स. फेरिंग्स मतलब क्या हो गया? नेजल चैम्बर जहां पे ओपन होता है, ठीक है. सो एक बहुत सी बड़ी सी कैविटी होती है जहां पे नेजल चैम्बर ओपन होता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है. सो ये इसको हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है. नेजल चैम्बर जहाँ पे खत्म हुआ ये हुआ फेरिंग्स, जहाँ पे आपका ये माउथ का भी जो पाथ होता है वो इधर ही आता है, तो दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स. ये जो वाइड पार्ट होता है दिस इज फेरिंग्स, ठीक है. सो व्हाट इज रिटन अबाउट फेरिंग्स? लेट्स रीड. It is situated at the back of your mouth. Back of your mouth is the location of pharynx, okay, and this is the common passage for air and food, ठीक है. ये आपने फिगर में भी देखा यहाँ पे, this is the common passage for both air and food, this pharynx, right? So it leads into an air tube that is trachea, ठीक है. ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप. विंड पाइप इज ट्रैकिया. एंड फूड ट्यूब दैट इज ईसोफेगस, ठीक है. ये दोनों ही फेरिंग्स के बाद शुरू होते हैं, ठीक है. फेरिंग्स जो है ये कॉमन लोकेशन होती है बोथ विंड पाइप और फूड पाइप, दैट मीन्स ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, बोथ, फॉर बोथ ऑफ देम, राइट. एंड नोज और माउथ का भी जो ओपनिंग होती है उन चैम्बर्स की भी वो फेरिंग्स में ही होती है, okay. So when not in use, the food tube is partially collapsed as it has soft walls, ठीक है. The entrance of the trachea is guarded by what? Epiglottis, ठीक है. एपिग्लॉटिस क्या करता है? किसको क्लोज करता है? The path of windpipe. पाथ ऑफ विंड पाइप, ठीक है. स्पेशली वो ऐसा रहता है और जब आप खाते हो तो वो ट्रैकिया को क्लोज करता है, तब वो ईसोफेगस में खाना जाता है, राइट. व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग इनसाइड, इसलिए आप खाते वक्त बोलते हैं ना कि बात नहीं करनी चाहिए खाते वक्त. क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर गलती से वो फूड जो है वो विंड पाइप में चला जाए, ट्रैकिया में चला जाए, देन यू विल स्टार्ट कफिंग. दैट इज इमरजेंसी रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी. जैसे ही आपका कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऐसे फूड का दाना आपका अगर ट्रैकिया में चला जाए फूड पाइप की जगह, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका कफिंग विल स्टार्ट.
एंड समटाइम्स वो एक्चुअली ज्यादा चला जाता है. जो छोटे बच्चे होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड उनका रिफ्लेक्स उतना स्ट्रांग अगर नहीं होता है, तो इट गोज ऑल्सो इनसाइड, एंड देन यू हैव टू ऑपरेट इट to take out, because lungs cannot retain anything like solid. Okay, it will block it. So yeah, so epiglottis is what? It is the guard of your windpipe. Okay, the entrance to the trachea is guarded by epiglottis, which closes it at the time of swallowing food. Okay, incomplete closure of epiglottis during swallowing can cause cough, which I told you. Okay, ऑब्वियसली जब हमको कफ आता है, दैट डजंट मीन कि हमारा जो वो ट्रैकिया के अंदर चला गया है. तब क्या होता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाया, और उसके पहले आपने स्वॉलो करने का कोशिश किया, कि आप कुछ बोल रहे थे और आपने खाने का वो टाइम नहीं समझ में आया, आपने खाना भी गलती से होता है ना, जब आप ऐसे कुछ बात कर रहे हो, ध्यान नहीं जाता और आप खाना स्वॉलो करने लगते हो, तो जैसे वो इनकम्प्लीट क्लोजर होता है और फूड वहां से पास होने वाला होता है, तो इट विल स्टार्ट कफिंग, तो ऑटोमेटिकली आपको कफ आने लगेगा. तो इसलिए वो खाना बाहर की ओर आ जाता है. सो देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर लैरिंग्स. लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स. ठीक है, एपिग्लॉटिस का आप लोग पोजीशन देख लो यहाँ पे. दिस इज एपिग्लॉटिस. ठीक है, ये आपका हो गया फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद क्या होना है, ये जो स्ट्रेट इधर जा रहा है, ये इसोफेगस है, और ये जो उसके आगे की तरफ है, दैट इज ट्रैकिया. ठीक है, पीछे की तरफ क्या है, इसोफेगस है, आगे की तरफ क्या है, ट्रैकिया है, विंड पाइप. ठीक है, तो आपकी विंड को एक्चुअली इस तरह से जाना होता है. ठीक है, लाइक दिस वे. ओके, द एरो व्हिच इज मार्क्ड. और खाने को कैसे जाना होता है, इट हैज टू गो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट एपिग्लॉटिस. ये जो एपिग्लॉटिस होता है, वो यहाँ पे थोड़ा ऐसा बनाया है, वो इस तरह से लटका होता है, और वो इसको क्लोज करता है, इस पोजीशन को क्लोज करता है जब आपको स्वॉलो करना होता है. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट इज योर लैरिंग्स. लैरिंग्स आपका उसके नीचे है, हियर सी, दिस इज लैरिंग्स. ठीक है, ये जो भी ये है क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड है, और वोकल कॉर्ड के इधर मतलब इसी पोर्शन को हम लैरिंग्स बोलते हैं. ठीक है, सो वॉइस बॉक्स इज लैरिंग्स, और इसको हम कॉमनली या पॉपुलरली क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है. एडम्स एप्पल क्या होता है, इट इज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स. ठीक है, उसका ही एक कॉमन नेम है. ठीक है, एडम्स एप्पल, दैट आई हैव, एनीवन, एनी आइडिया? Miss, there's a story about the Adam's apple. Can you tell? Miss, I don't remember it properly, but Miss, as far as I know, that the first two men on the earth were Adam and Eve. So God gave them two apples to have, one apple to Adam and another one to Eve. It is said that Eve was able to swallow the apple properly, but Adam did not chew the apple properly. That's why the apple got stuck in his neck. That's why a portion of his neck got swallowed. From that, the name came Adam's apple. Yes, that fruit was a forbidden one, that's why. हाँ, so understood. So जो swollen सा structure आया, तो आपको जो ये structure सा यहाँ पे दिखता है ना, स्पेशली लड़कों में बहुत प्रोमिनेंट होता है ये वॉइस बॉक्स. ठीक है, सो दैट इज दैट पोजीशन, इसलिए उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. ठीक है, Miss, can I try? हाँ, यू कैन आल्सो ट्राई. यस अश्मिता, बोलो. Miss, as far as I know, during adolescence, there is a change in degree of the Adam's apple, I mean of the voice box in the boys. क्या क्या, अगेन कैन यू रिपीट? During adolescence, there is a slight change in the degree of the voice box of the boys. So it becomes prominent. Yeah. So that is during adolescence. आप देखते हो ना, लड़कियों की आवाज बहुत श्रिल होती है, लड़कों की आवाज थोड़ी भारी होती है. तो क्या होता है, लड़कियों की आवाज जो होती है उनमें वॉइस बॉक्स में बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशंस नहीं होते हैं एडोलेसेंस में, लेकिन लड़कों में क्या होता है, काफी मतलब मॉडिफिकेशंस आते हैं जिनसे उनकी आवाज बहुत हेवियर होती है, तो उनके वॉइस बॉक्स काफी मॉडिफाई होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट आपको ओपनिंग दिखती, मतलब एक मतलब उभरा हुआपन जो होता है ना,
प्रोटूबरेंस, ठीक है, वैसा कुछ प्रोट्रूडिंग सा एक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसलिए हम उसको एडम्स एप्पल, वो उसका वो भी रीजन है जो स्टोरी है, ठीक है, उसकी वजह से बोला जाता है. एंड दैट appearance, more of its appearance in boys is due to that reason. इसलिए आप बच्चों की आवाज सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रहे हैं. when they sing usually you will see, मतलब जो बच्चे 7 साल 8 साल के बच्चे सिंगिंग कंपटीशन में when they sing, many a times 6-7 की एज में you won't understand the difference and it looks more like a girl child voice, right? But after adolescence only there will be a prominent difference in the voice quality. Okay, so that is there. So this is what, this is a cartilaginous structure, it is hollow obviously, ठीक है, ये hollow structure होता है, cartilaginous होता है in make, and it is located at the starting point of your windpipe, ठीक है, कि आपका windpipe का starting है, यहाँ पे इसका location होता है, ठीक है. So I think it's 6:30, आप लोगों का next class है, right? So we'll just finish this part. Okay, you can feel it with your fingers in the front part of your neck, right? You understood the location जहाँ पे दिखता है. So when you swallow something, this part rises and falls. आपको पता चलता है ना जब कोई swallow करता है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मुंह में ही रखा है बच्चे ने, मम्मी लोग बोलते हैं ना कि चलो अंदर अंदर लो खाने को, तो वो उससे पता चलता है. So the larynx contain 2 ligamentous folds जिसको हम बोलते हैं vocal cords, ठीक है. और ये जो vocal cords होते हैं, जिनको जितना आप ट्रेन करते हो, इनकी श्रिल, इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंसी आती है. जैसे इसीलिए सिंगर्स रियाज जो बोलते हैं, रियाज करना क्या होता है, आप इसको बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो, इसमें बहुत सारी चीजों को आप अवॉइड करते हो, बहुत कुछ ऐसा मतलब ना नहीं खाते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको डिफरेंस ऑफ टोन्स को मेंटेन करने में डिफिकल्टी करते हैं, इसलिए वो, इसीलिए जब बहुत लोग एज हो जाती है लोगों की, सिंगर्स की, तो धीरे धीरे वो वोकल कॉर्ड वो होने लगता है, इट डजंट रिमेन दैट परफेक्ट. ओके, सो एज के साथ भी वो खत्म होता है, एंड योर ईटिंग हैबिट्स विल आल्सो डिस्ट्रॉय इट, ठीक है. स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ले रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, बहुत ही ज्यादा मतलब स्पाइसी चीजें और अल्कोहल और ये सब चीजें तो छोड़ ही दो. अगर कोई बहुत स्मोक करता है और बहुत अल्कोहल लेता है, so he cannot sing actually with a long run. आपने देखी होगी आशिकी, right? आशिकी थी ना वो, जिसमें वो singer was a drunk person and then he stopped singing, मतलब he couldn't sing that good because alcohol actually destroys your vocal cord. Okay, so many such things can destroy your vocal cords. So air expelled forcibly through the vocal cord vibrates them, which produces sound. Okay, by adjusting the distance between the two cords and their tension by means of attached muscle, a range of sound can be produced. इसीलिए लोग मिमिक्री कर सकते हैं, बहुत लोग लड़की की आवाज प्रोड्यूस कर पाते हैं, लड़कों की भी कर पाते हैं. Different type of sounds they can produce. How? Because they can actually train their muscles, they can exercise that muscle which can keep the distance between these vocal cords. ओके, वो वोकल कॉर्ड्स के बीच के डिस्टेंस को आप जितना मेंटेन कर पाते हो, जितना एडजस्ट कर पाते हो, उतने टाइप ऑफ साउंड्स यू कैन प्रोड्यूस. ओके, सो दिस इज अबाउट योर larynx. Okay, so here we will end the class because it's 6:30. ठीक है, so any questions till here, any doubt, any question? No question? Chalo, then we'll end the class here. Okay, see you later. Thank you, Miss. Bye everyone. Thank you, ma'am.